Then we will start. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मासिस्ट की आवाज़। मैं हूं हर्ष यादव और आज हम एक टॉक शो लेके आए हैं जिसमें हम फार्म डी के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फार्म डी किस तरीके से भारत में लाया गया था और आज उसकी स्थिति क्या है। तो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं किशन लबना जो कि उदयपुर से हैं और वो आपको अपने जो भी उनकी स्टोरी रही के साथ शेयर करेंगे फार्म डी के रिगार्डिंग में। तो ओवर टू यू किशन, प्लीज आगे बढ़ाइए सेशन को। I don't understand how to thank Rohit sir and Harsh sir to provide this opportunity on such a huge platform that is Voice of Pharmacist. Sir, warmly, it's my privilege to have me around the experts like you, sir. So it's a great day for me, sir. I hope in future, though, you will provide me or you will lead me to the such more opportunities, and combinedly, we both togetherly, we will take our profession to a good position, sir. So yeah, there would have Right. before proceeding to questions, I will let you know the about the family course, like when it was implemented, when it was introduced, what was the aim, what are the challenges that we are on the ground relative what we are facing. Like on the papers, there are many things what they have written there, like we are the doctors and that all. But in actual and on the ground reality, what we are facing, that is the main questions that or the issues that I will clear from here. Then. Pharm-D is a professional course in the healthcare sectors, which was introduced in 2008 in India with standardizing the global, like it was in USA where PharmD courses are the minimum, their pharmacy is a pharmacy course, which is a minimum class qualifications. Whereas in India, if you compare in India, we have the diploma in pharmacy, which is considered to be the best. So it was implemented in 2008 with in consultation with the from the PCI with consultations with the Ministry of Health and Family Welfare in the section 10 of pharmacy with section 10 of Pharm-D regulation 2008. Sir. Yeah, there are many reasons that why it was introduced in India. I will clear certain reasons. Like if we start any work or any course, like whatever, there would have been many reasons like the implement for the implementations. So there were the first reasons behind that would be to bring in efficiency in the healthcare sectors. Like if you see that how in the healthcare sector of the India is not like up to the mark or not up to the point that we can say that each and every person or each and every patient or people getting good treatment. Like so, this किशन, was the first. आई वांट टू इंटरप्ट यू Yes, हियर, sir. सॉरी फॉर दैट। मैं ये जानना चाहूंगा Yes, अपने sir. व्यूअर्स से कि आप जैसे फार्म डी अभी कर रहे हैं, आप फार्म डी फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके Yes, sir. पीछे क्या रीजन देखते हैं कि पीसीआई ने 2008 में पीसीआई को हमारे इस देश में लेके आए, उनका क्या इसके पीछे विजन हो सकता है? तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। Yes, sir. Sir, a very almighty question for me, sir, because I always try to challenge the question, sir. So this would be my almighty for me, sir. So the reasons behind bringing or the vision, or I can say the vision and the reason behind the family course would have been that we can just complete or we can complete the shortage of the doctors in the country. Like when in 2019, when Ministry of Health and Family Welfare suggest the Parliament that we have or country have one doctor over the 1500 people. Like we can just predict that before 2019, how it would have been the shortage of the doctors. Like the first main reasons could be this, sir. So we can complete the shortage of doctors also. Sir, the second reason or the second reason for the introducing the course in 2008 or to bring the farm the course in India would have been that there are the many complications or there are the many adverse events of the drugs, sir. If I take example in the case of antihypertensive drugs, there are many side effects. Like if we take the example of anti-cancerous drug, there have been many side effects, adverse events, due to which patients face many other problems, other complications, secondary complications they are facing. So I can सो say that to किशन, reduce सो all.
जो Yes, आप एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी sir. हमारे देश में फार्माकोविजिलेंस की बात हो रही है। और मेरे ख्याल से जो Yes, sir. पीवी है 2010 के आसपास आया है और 2008 में फार्म डी चल रहा है। तो फार्मिको Yes, sir. विजिलेंस के लिए फार्म डी करना चाहिए या फिर एम फॉर्म के बाद भी फार्मिको विजिलेंस में एंट्री है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? Yes, क्योंकि sir. अभी This question is रिसेंटली also. जो पीसीआई है उन्होंने काफी सारे नोटिफिकेशन निकाले हैं रिगार्डिंग जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में, और फार्माको Yes, sir. विजिलेंस जो भी है हर हॉस्पिटल में इसको रखा जाएगा और वहाँ एक फार्मासिस्ट ही Yes, कार्यरत होंगे। तो इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। yes, sir. These are all. These questions is also almighty for me, sir. Because I always try to challenge the questions. Like as you said before that we have the PV, like pharmacovigilance in India, to reduce all such adverse events and side effects and adverse effects or ADR reactions. So, sir, the main thing for introducing this course, or the main reasons for the one thing I want to say that, sir, that pharmacovigilance, which is actually is on the paper, sir. But if we see on the reality, on the ground reality, that many hospitals do not have the pharmacovigilance center, sir. So this is the main problem, sir. So due to which the government thought that the PCI have been thought of that if we bring the clinical pharmacist in the hospital, so might they will reduce this, they will identify these adverse events, adverse side effects, and they reduces the percentage of the death which occurs due to these events, these adverse effects, side effects. So this is the one reasons for introducing the adverse event in clinic this Pharm-D course in India, sir. Okay. My next question is, Yes, sir. what is the main reason for the student to take admission in Farm D, and what the reality they are seeing after admission in Farm D? Like already we have discussed in our pharmacist ki Awaaz page that one case of Yes, Simon Josha. Uh, he also yes, attempt many applications to the PCI that his child is not getting a job after doing the Farm D. That is yes, a very expensive course uh, as yes, compared to other pharmacy courses. So, what are the students currently seeing PharmD as a future? yes, sir. All right, sir. The main reasons could be like taking the admissions. Like though in Pharm-D, sir, one thing I want to tell that the ground reality is this, sir. Those students used to take admissions in the Pharm-D, sir, who unable to get admissions in the MBBS seats. Like we can see that there are the very less seats where the 16 to 17 lakh students used to appear in the NEET UG, sir. But out of 16 or 17 lakh, only few thousands of students used to get the MBBS seats, government seats. So we can see like how students willing to be a doctor, sir. So might they have thought that if we take the admission in the PharmD, so they will get the recognition as a PharmD. But when they came in when they used appear in the first year, they used to know that they came to know that the reality behind the becoming the doctor is not as much as expected as it was thought of in the 12th class. So these could be the one reason behind the taking admissions in the PharmD course, sir. And the second thing what I will tell is that, sir, they think that they will get the clear recognitions. They might be get post in the CHCA, PHC in the rural area, so they can serve the students. But we can see that after implementation of the PharmD course in India in 2010, there were no any message from the PCI or even from the Ministry of Health and Family Welfare, which in which they combinedly they introduced this course in India. So we can see there is no any amendment in that, sir. That we can see, and also we have seen that we are the witness for this, sir. In the rural areas, the patients, the people, still they are dying to the because of the lack of doctors. We can see many primary centers, sir. Even in my village, if I talk about my village, there are many primary health centers, sir, or community health centers where there is a lot of lack of doctors. So might the students, the reason behind the taking of admission in the PharmD, it would have that they might get forced into the CHC and PHC. But the actual reality, if we see that this is not the reason that why they are taking admissions. This could be the one second another reasons, and the third reasons. If I will tell that
why students are taking is that there are the wide if I say when I entered in the when we entered in the pharmacy professions, there are many streams or the fields where and students being a pharmacy student we can post in anywhere. So these could be the reasons behind the intro or the taking admission into the pharmacy, sir. ओके किशन, मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो फार्म डी है, ये हमने बार बार बोला है कि ये 2008 में आया, तो इस चीज को एम्फसाइज करने का एक ही कारण है कि आज 2022 चल रहा है, और फार्म डी के लिए जो Yes, जॉब अपॉर्चुनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, अभी तक पीसीआई इसे तैयार करने में फेल है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, yes, जो एम फार्मेसी होता है वो बी फॉर्म के बाद होता है। बी फॉर्म इट सेल्फ अ 4 ईयर कोर्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट हैव टू टेक एडमिशन फॉर मास्टर इन फार्मेसी, दैट इज अ 2 ईयर कोर्स। So if a guy want to do Pharm-D, that is abbreviation is uh, uh, doctor of pharmacy. One is a yes, sir. diploma in pharmacy, that is D Pharma, and Pharm-D is doctor of pharmacy. तो ये जो कोर्स है वो 6 साल का कोर्स है, और बी फॉर्म के बाद अगर वो इस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेता है तो उसे 3 इयर्स अपने देने पड़ेंगे। आफ्टर 4 ईयर ही हैज टू स्पेंड 3 इयर्स टाइम इन द डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और यहाँ पास आपको प्रोजेक्ट और थीसिस जो होता है मास्टर इन फार्मेसी में वो 1 साल का होता है, और जो आपका फार्म डी है उसमें 6 महीने का होता है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। और इसमें आप प्रीफिक्स डॉक्टर यूज कर सकते हो फार्म डी में, एम फॉर्म में आप डॉक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इवन डी फॉर्म में। Right. बार बार मैं डी फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी जो संख्या है बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और वो डीआरएक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका भी कोई लॉजिकल नोटिफिकेशन अभी तक पीसीआई के नहीं है, तो हम इस चीज का इस्तेमाल Yes, नहीं कर सकते। ये एक भ्रामक एब्रीवेशन है। दूसरी बात यह yes, है sir. कि इसमें जो इंटर्नशिप है, फार्म डी में आपको 1 साल का इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा लास्ट में, जो कि एम फॉर्म में Yes, इंटर्नशिप नहीं है, क्योंकि उसमें आपने 1 साल अपना प्रोजेक्ट और थीसिस सबमिशन के लिए दिया है। तो ये थोड़े से बेसिक डिफरेंस मैंने बताया है। और सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जो एम फॉर्म है उसको एआईसीटी, जो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन है, वो भी रेगुलेट करती है, और पीसीआई भी रेगुलेट करती है। बट फार्म डी को केवल पीसीआई रेगुलेट करती है। तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल बेस पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके फाइनल ईयर में 1 ईयर का डेडिकेटेड इंटर्नशिप है, जो डॉक्टरों के साथ और पेशेंट से डायरेक्ट एक इंटरेक्शन इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं हमेशा से जो फार्म डी, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है, उसके लिए हमेशा हमारे देश में डिमांड बनी है कि वो फार्म डी के द्वारा फिलअप किया जाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब किशन से है, जो मैं ऑलरेडी हमारे पोस्टर्स में बताया गया हूं, कि चैलेंज ऑफ फार्म डी स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट्स ड्यूरिंग द फार्म डी जर्नी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या चैलेंजेस हैं? yes, sir. Sir, there are the many challenges that I faced, or when I talk with my seniors who are the recently graduated in the from the farm, they used to share all the challenges and approaches what they faced, and I also used to share with them, sir. So first, I will say that what are the challenges that what is the first challenge that they have faced and what I am facing is this unavailability of the teachers in the colleges. If we see that the B Farm graduate or the M Farm graduate, they used to teach us, sir. Whereas if we see, as you also told now that the Farm D is completely patient oriented, sir. It is completely clinical based course, sir. So where the B Farm and the M Farm, those who have completed B Farm and M Farm, they are teaching us so what we can expect from them. Like clinically, if something we want to but expect but from them, then but Kishan, when one new course coming to our country, then we have no not earlier any infrastructure, right? सो आपको जो yes, sir. पढ़ाने के लिए वही आएंगे जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, मतलब जो अर्लियर Yes, चलते आए जैसे एम फॉर्म, तो आपको वही टीचर मिलेंगे। एक बार जब फार्म डी के फर्स्ट बैच पास आउट हो जाते हैं तो वो एज अ बीइंग योर टीचर आपको सर्व कर सकते हैं। बट फर्स्ट अगर कोई कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास जिस तरीके के स्किल और टैलेंटेड पर्सन अवेलेबल हैं वही आपको टीच करेंगे। इसमें आप क्या बोलते हैं, कि ये मैं सही बोल रहा हूँ? sir. Sir, you are completely agreed, but I want to intervene something that ओके, there are many sir, medicines related subjects in our course, sir, like pharmacotherapeutics, pharmacology, which can be taught by the medicine experts, sir. Like you ओके, told that if something is introduced by the government or before planning.
because there was no any planning before introducing into the before introducing this Pharm-D course in India. Might they have thought, and might they can delay something, delayed this course to be introduced in 2010, 12, or 13 or 14, whatever, sir. So they should have proper planning. Like if I say on from the my vision, like the few subjects like medicines, like pharmacotherapeutics, that have been taught by the medicine expert, so we can get more clinical knowledge, so we can independently we can interact with the patients, and we can serve the patients related to his illness, related to the disorders or disease, and that also. So these thing I want to intervene in this. So this was my first challenges that you told, that unavailability of the teachers, and you also intervened in that, sir. And the second the second challenges that I will say that there are, sir, many. There is no any proper recognition of the Pharm-D course in India. As you and I think all this country knows that there is no any complete, not complete. I can say even the half recognition is not of the Pharm-D course, sir. When we go in the hospitals during our internship hour, even right from second year to sixth year, we are facing one thing. We are facing the challenge is there that when we go to the doctors for any consultation, for any queries, like if a particular patient is prescribed by these medicines, so why you are just if we politely ask, like it is not our right to ask them, but if we politely ask this, sir, the reason, what could be the reason behind the prescribing the broad spectrum antibiotics, even whereas the patient is suffering from the like low illness or that, we can prescribe them narrow spectrum. So here in Pharm-D, we'll come to that point that how when Pharm-D can play important role in the community pharmacy. But I want to tell one point is that, sir, we can intervene in that, sir. When the broad spectrum antibiotic is prescribed to a particular patients for the short illness or for the low illness, then it is our duty. Like as you told that Pharm-D course is very much equivalent to the, or it is suitable for the post of the pharmacovigilance, where the maximum drug adverse reactions, like it can be solved by the clinical pharmacist. Also, I want to say that, sir, we study complete 6 years. In this 6th year, the 5 year we study in academic, like in the college, and the one complete year we go in the hospital and we see the patients, and we try to get more and more knowledge from clinical knowledge from the patients. And also, if willingly students, like if I say of myself, sir, I right from my second year or third year, I used to go in the hospitals. Like in the night hours, I always used to go in the hospitals, and I get the clinical knowledge, so I can enhance my knowledge. Like, and I can stand to that positions where a doctor wants to be want and clinical pharmacist to be remain, sir. So this is how we can say that it was my third challenge, that what we are studying and what we are getting. Another another challenge I will say that there is no any complete role and responsibilities of family, sir. Even after I think almost 10 to 12 year, or after passing three five more than five batches of family, sir, there is no complete roles and responsibilities of family. So what is the reasons, like why the PCI, why the Minister of Health, Minister of Health and Family Welfare don't want to intervene, and they always try to say, divert this matter. So these are the whole challenges. These are the ground reality what we are facing, sir, in India. ओके, यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे हम ये जनरली जो फार्म डी कोर्स है वो फॉरेन से कॉपी करके यहाँ लाया गया था। कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, हम स्टिल वी आर इन डेवलपिंग स्टेज, तो हमें कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो डेवलप्ड कंट्री से यहाँ अपने देश में लाना पड़ता है। इवन अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हमने दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं। तो वैसे ही ये जब फार्म डी आया था तो फॉरेन में क्या होता है, जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी मेडिसिन को तो उसको एक फार्म डी जो फार्मासिस्ट है वो रिव्यू करता है कि उन्होंने सही डोज प्रिस्क्राइब किया है। उसमें एक फार्मेको इकोनॉमिक्स भी आता है कि अगर वो पेशेंट किस बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट उसका जो सुटेबल अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है ड्रग का, जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज नहीं किया जाता, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। और आपको सब्स्टिट्यूट मेडिसिन दिया जाता है जिसकी प्राइस कम होती है मार्केटेड प्राइस, क्योंकि जो ब्रांडेड नेम्स हैं मैक्सिमम हमारे इंडिया में बैड प्रैक्टिस ये भी होती है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स ब्रांड नेम लिखते हैं। जो आसपास के क्लिनिक होते हैं उसके आसपास जो मेडिकल स्टोर होते हैं या फार्मेसी होते हैं, मेडिकल स्टोर भी रॉन्ग वर्ड है, हमें अपने देश में फार्मेसी वर्ड यूज करना चाहिए किसी भी मेडिकल स्टोर, ना कि केमिस्ट और ड्रगिस्ट। ये भी हमारा
प्रोफेशन नहीं है। हमारा प्रोफेशन फार्मेसी है। तो मैं अपने सारे व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो मेडिकल स्टोर खोलना चाह रहे हैं तो मेडिकल स्टोर ना बोले, आप उसे फार्मेसी बोले। तो वो जो मेडिसिन है वो वही फार्मेसी में मिलेगी। तो ये जो रिव्यू करने का तरीका है, ये इस तरीके की चीजों को हम पीसीआई ने 2008 में सोचा था। आप सोचिए इस बारे में कि हमारे देश में बहुत सारे ड्रग के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इस तरीके से आप समझ लीजिए कि हम किसी चीज को खाएं और उसका एक जो हम नहीं चाहते थे ऐसा इफेक्ट हमारी बॉडी को मिला, एडवर्स अनडिजायरेबल इफेक्ट की तरह से आप इस चीज को समझिए जनरलाइज वे पे। तो इस चीज को कम करना है, तो इसके लिए फार्मिको विजिलेंस होता है जिसपे आप रिपोर्ट करते हो। इवन अगर आपने कोरोना के टाइम में वैक्सीन भी लगाया होगा, तो किसी को हॉट चिलिंग सेंसेशन आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो आपको इसको ऐसा एज अ कॉमन सिम्टम नहीं लेना है, आपको इसको रिपोर्ट करना होता है फार्मिको विजिलेंस में। तो ये सारी जब पूरे जो अलग अलग हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, जब ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हम अपने देश के हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ कई बार देखा जाता है कि डॉक्टर्स में ईगो क्लैश होता है, नर्सेस के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, फार्म-डी के साथ। बट हमें उनके नॉलेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि अपने ईगो लाना चाहिए। क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक के हाथ से नहीं चलता। जिस तरीके से हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, और कोई छोटी है कोई बड़ी है, पर दोनों जब पांचों मिलती हैं तब वो मुट्ठी बनती है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो मेन जो मोटो है वो है हमारे पेशेंट कितने जल्दी रिकवर हो, कैसे हमारा जो डेथ रेट है वो कम हो। जैसे किशन ने बताया कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, जिसके कारण जो नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स हैं वो फेल होना शुरू कर देती हैं। अगर आप थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स चला देते हैं किसी पेशेंट में, तो जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं बन पाते, क्योंकि जो ड्रग डिस्कवर हो Yes, चुके हैं वो लिमिटेड हैं। ये बात हमें हमेशा समझना चाहिए। जो फार्मासिस्ट yes, sir. है, जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से है, वो उसके फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। मे बी वो टेबलेट बना रहे हैं, मे बी वो सिरप बना रहे हैं, मे बी वो उसके अदर फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं, जेल प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वही है। तो ये बात एक Yes, फार्मेसी के तौर पर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि ये सारी चीजों को मिलके ही कम किया जा सकता है। अगर हेल्थ सेक्टर में पैसे को ऊपर रखा जाएगा तो हेल्थ डाउन होगा ही होगा। अगर अब बड़े बड़े yes, sir. हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पैकेजेस चलते हैं, टेस्ट के पैकेजेस चलते हैं। तो हेल्थ सेक्टर बिजनेस का सेक्टर नहीं है, सबसे पहले हमारे देश को ये समझना पड़ेगा। और ये सेवा भाव का सेक्टर है, जहां आप सर्विस करते हो और आप ऐसा मिनिमम अमाउंट या जो कमीशंस बोल सकता हूं मैं, यहाँ ये वर्ड यूज कर रहा हूं बट मेरा सही वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको भी अपने घर का ब्रेड एंड बटर चलाना है। पर यहाँ Yes, yes, दलाली करना इस सेक्टर में, ये ह्यूमन एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। आपको इस टाइप का काम नहीं करना है। तो जो फार्मेसी रैंकिंग करते हैं, ये उनके लिए भी एक अवेयरनेस है। जो अननेसेसरी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके लिए भी एक वीडियो है कि आप ऐसा जो अनलॉफुल चीज है उसको नहीं करें। हमारे देश में जो फार्मेसी एक्ट है 1948 और ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945, उसका आज तक ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया है। अगर वो इंप्लीमेंट ही बस हो जाए, उतने में ही हम अपने देश में जो हेल्थ सेक्टर है उसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। पेपर में yes, तो sir, हम definitely. विश्व फार्मेसी गुरु बन रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी हर एक फार्मासिस्ट और हर एक जो भी मेडिसिन या हेल्थ सेक्टर से गुजरा है वो इस चीज को फील करेगा कि हम कोलैप्स्ड हैं। मैं सही कह रहा हूँ किशन? Yes, sir, definitely, sir. I completely agreed with you, sir. And also, I want to intervene one thing. There, as you talked about the implementation of this Pharm-D course and with the global standardized course that is in USA, because we are in the developing stage, and whereas that USA is the complete developed state. So one thing I want to say that, sir, if I talk about the USA in the healthcare sector. So generally, they are the PharmD students. They're PharmD, where generally they used to call PharmD as a clinical pharmacist. Also, we are known as clinical pharmacists in India on the paper, not on the sir, reality, sir. On the paper, we are known as clinical pharmacists. But whereas I have many friends over in the USA, sir, where I generally talk with them, and then they used to guide me with the real situations, what is going in the USA and what they want, and what I also share something something about the healthcare system of the India to them, sir. So they always say one thing.
Like if you want to get proper recognition, then we should have that knowledge, that kind of knowledge. Like if we want to stand in the front of doctor, and if we want to intervene something related to the pharmacotherapy of particular disease, then we should have that kind of knowledge, sir. Because without knowledge, it is not possible to intervene with such highly qualified or highly skilled doctors, sir. So this is one thing I want to say. That, but on the another hand, if we politely talk with the doctors, they do not give us such means good kind of reaction from there. Like they always say that if you are pharmacist, then you will be pharmacist. Like there is no any other thing. Like if the on paper you are the clinical pharmacist, but in front of us you are the pharmacist. Like if you have something queries, then you can come to us. We can solve the questions. Like for these reasons only, the government or the for ministry and health family welfare has not introduced sports in India, sir. Because if we are the we, if we the government higher authorities consider us as a part of the healthcare sector, then the doctors should also be, they should also like they should cooperate us, they should guide us. Like if we are the, like we are the birds, sir. To just nurture the birds, you always need something to give them. Like highly professional course, it is highly professional course in the healthcare sector. So coming to the point that when I talked with one of my friend in the USA, he told me that in USA we used to prescribe the medicines to the to the patients, and we used to diagnose sometimes. Like in the unavailability of the doctors, they used to, because they are getting that kind of knowledge from there, sir. Because there and the thought process of this similar. The Dr. B. Suresh Chandra sir also called that we are just try to making equivalent it to the global main issue is going on. We are seeing in the today's day-to-day newspaper that Montu sir, Dr. Montu sir, PCI president recently, he was selected, sir, from the Gujarat. He told that we want to introduce some new code that would similar to the globally. But I want to interrupt in that, and I want to say one thing to with this platform is that, sir, why they want to introduce new codes? Like instead of bringing new codes, they should just try to work on the already implemented code, that is Pharm-D code, because it is very much good, sir. Because if Montu sir really want to serve the country and in the good manner, then he would have thought of the bridge courses in the India, sir. This would be the good idea what I can give as a student from here, and what are the जैसे कि किशन, अब yes sir. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अपने व्यूवर्स भी, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि जो फार्म डी कोर्स Yes है sir. और जो Yes sir. और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज में फार्म डी चलते हैं, उसके कोर्स का जो सिलेबस है उसमें कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंसेस और बोथ आर सेम? Sir, very much similar, sir. Not extraordinary thing, but the guidelines are according to our Indian, and their guidelines are according to their like FDA and that also. This is the only thing which is different. Other rest of the course is same, sir. There is no anything. Then this is the reason. So by this, I can say that why the government, why the PCI, they want to bring new courses. Like Rohit sir also tweet, and he said before when we talked, then he said that instead of bringing new course in the pharmacy profession, you try to bring the jobs for already implemented course यस like यस pharmacy course in India. So this is the thing what I want to raise, and we are say if I say you if I show you the complete ground reality from of the PharmD students, they are worried, sir. If while they're taking the admission in the first year, they don't know anything about the PharmD, and when they entered in the second year, they get the they you have to work like on the subjects like pharmacotherapy, therapeutics, pharmacology. So they came to know that we are working such hard and we are investing 10 to 12, 15 lakh rupees behind this PharmD course. Also, we are wasting our time. 6 years is more than sufficient, sir. We can say that in the sixth year, we ऑब्वियसली can complete MBBS किशन, course is. एमबीबीएस कोर्स Yes, sir. भी Yes, 6 साल का होता है, आप भी फार्म डी 6 साल का कोर्स कर रहे हैं, फिर आपको एक जो yes, yes. एक चेरी ऑन द टॉप है, डॉक्टर प्रीफिक्स भी आप यूज कर सकते हैं। तो काफी सारे इसमें कोर्स में लाइमलाइट डाले गए हैं जो कि बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। बट मैंने अपने इस फार्मेसी कैरियर में अब तक जो देखा है, 2008 से ये 22 तक आ गया है, फार्म डी को वैसा रिकॉग्निशन हमारे सोसाइटी में पीसीआई लाने से फेल हो गई है, ये तो मैं मानता हूं।
एज अ फार्म डी Yes, स्टूडेंट आप कर रहे हैं, फार्म डी पढ़ रहे हैं, आप क्या इस मेरे बात से एग्री करते हैं? yes, sir. I completely agree with you, sir. Because as I told before few minutes that the ground reality in the paper, in the statement or the draft written on the papers are completely different, sir. As we openly as someone open XYZ, I don't know them. Is he or she will open the net Chrome, and when he or she will search that what is Pharm-D, they're written that it is a professional course which consists of 5 year academic and 1 year internship. So we can see similar thing in the BMS, like where the before few times the BMS students even they were also prescribing the allopathic medicines. BHMS even एग्जैक्टली they were अभी studying. शायद मैंने So रिसेंटली कोई नोटिफिकेशन देखा था जिसमें बीएमएस को कुछ मिनिमम एलोपैथिक ड्रग्स की लिस्ट दे दी गई है yes sir, जिससे yes वो sir, उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये yes sir, हमारे definitely. समाज में, हमारे सोसाइटी में ये एक और सवाल उठता है, क्या बीएमएस बीएचएमएस ये सारे मेडिसिन को प्रोक्योर कर सकते हैं एलोपैथी के? ये एक पहला सवाल बनता है, क्योंकि फार्मेसी एक्ट तो ये कहता है कि जहां भी बल्क मेडिसिन का स्टोरेज आता है वहां फार्मासिस्ट जरूरी है। मेडिसिन का Yes sir, yes sir, प्रोक्योरमेंट और डिस्पेंसिंग, इसके लिए फार्मासिस्ट जरूरी yes, है। तो अगर एलोपैथी yes, की दवा प्रिस्क्राइब बीएमएस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो इसको स्टोर करेगा। तो क्या उसके yes स्टोरिंग sir, कैपेसिटी का कोई गाइडलाइन है कि वो कितने मेडिसिन स्टोर कर सकता है? क्योंकि ये एक बिजनेस का रूप भी ले सकता है एक क्लिनिक के अंदर। yes sir, definitely. Sir, तो as you ये told सारे that बताइए बताइए। I want to. Sir, here also, if I see, because I usually go to the hospitals in the villages where the BMS and BHMS doctors used to be there, and they used to prescribe the medicine. I have seen one incident in my village even, sir, that BHMS doctor prescribed medicines. I don't know the name of that medicines because I have seen this incident when I was in the second year. And from there, always try to gain more and more knowledge regarding the medicines and that also. So I have seen that there was one major complication after prescribing that medicines, and the death of that particular patient who took that medicines occurs. So we can see from here and from this big platform, I want to say that how this if this continuously if the BMS doctors, BHMS doctors will prescribe these allopathic medicines, then how we can what could be the rate of the the death rate of the patients, like there are many reasons, there are many adverse events due to which the patient's death occur. So we can't expect, sir, because the India is in such huge country, sir, which consists of I think 1.39 1.40 billion population, sir. So it is not possible for us to just go to each and every hospital or to go to each and every doctor and say that okay, so particular medicine is there, you have to prescribe in this manner and that. But we can appoint as a clinical pharmacist in particular hospital. We can appoint a pharmacovigilance in particular hospital. So they can intervene in that, sir. So we can reduce the death percentage in our health sectors, and we can increase the healthcare systems at the very good position. We can take our health sectors at the very peak position. So this is how we can just we can implement. And this was the reason that the reason, as I told before few minutes, that the reasons behind bringing this course in India could be the one, like to reduce the death in our day-to-day life, so we can reduce. So this thing I want to intervene into. तो बेसिकली ये है कि जैसे फार्म डी हमारे देश में आता है और मतलब है देश में, बट इनको अभी तक जॉब वैसी नहीं मिली है, इनका रोल उस तरीके से जस्टिफाइड नहीं हो पा रहा है जिससे ये सोसाइटी को सर्व कर सके। क्योंकि हमने एक अपना हथियार तो तैयार कर दिया है अपने हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, बट उस हथियार को चलाने ही नहीं दिया जाता। ये ऐसी कंडीशन है। मैं सही कह रहा हूँ किशन? आप एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. I तो मैं completely agree with you, sir. एक चीज और ये भी बोलूंगा कि हमारे देश में जो पैथी होता है, आप इसको ध्यान से समझिए कि हर पैथी का एक अपना प्रिंसिपल होता है। चाहे होम्योपैथी बोला जाए, चाहे एलोपैथी बोला जाए, चाहे सिद्धा, यूनानी या चाइनीज मेडिसिन बोला Yes, जाए, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस है। आयुर्वेदा भी एक डिफरेंट प्रैक्टिस है। पर अगर इस yes, sir. पैथी को प्रैक्टिस करने वाले ही अपने पैथी पे बिलीव नहीं करते और एलोपैथी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप उनसे क्यों इलाज कराएंगे? सबसे पहला सवाल ये है। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको उस पर बिलीव होना चाहिए, अपने
जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जो पैथी है, उस पर बिलीव होना चाहिए। होम्योपैथी में अक्सर पेशेंट की हिस्ट्री पूछी जाती है, पूरी बैकग्राउंड, उसके बिहाफ से Yes, sir, yes. उसके डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, फिर जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलती है। बट एलोपैथी इस तरह से नहीं है, एलोपैथी की पूरी साइंस ही अलग है, आयुर्वेदा की साइंस अलग Yes, है। तो अगर हम इस तरीके से जो एलोपैथी मेडिसिन के राइट्स को बीएमएस, बीएचएमएस या अदर पैथी को देते जाएंगे, तो फार्मासिस्ट का जो एरिया है वो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज होता जाएगा धीरे धीरे। तो हम yes, जो sir, definitely. फार्मेसी जो एक कॉलम बना हुआ है, जो हेल्थ सेक्टर को उठाया हुआ है, वो एक बहुत ही हिडन कॉलम है, जो न्यू है। बिल्डिंग तो पूरी खड़ी है, बट जो न्यू, जो पूरे मेडिसिन सिस्टम को चला रहा है, वो एक फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी है, जिसको हमें अपने समाज में रिकग्निशन देना ही पड़ेगा। और नहीं देंगे तो नॉलेज के बेस पे फार्मासिस्ट इस हक को लेके रहेगा। ये फार्मासिस्ट की आवाज से ये एक आह्वान किया जा रहा है, और हम जल्द जरूर ही सब मिलके इसमें कामयाब होंगे। क्योंकि फार्मासिस्ट में इतने सारे कोर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, बैचलर इन फार्मेसी हो, एम फार्मेसी हो, फार्म Yes, डी हो, पीएचडी हो, तो कोई कोर्स एक दिन में इतने सारे कोर्स अलग अलग सेगमेंट के रन नहीं कर सकता। बहुत पुरानी yes, sir. हिस्ट्री है फार्मेसी की, और इस हिस्ट्री को हमें मजबूत करना है। तो जिस तरीके का नॉलेज है, उस तरीके का इसको मैं वेपन से तैयार कर रहा हूं, क्योंकि हम एक डिजीज को इनकाउंटर करने जा रहे हैं। तो जो Yes, जितना sir, yes. ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, जो ज्यादा स्किल अपने में डेवलप कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर कैडर होना चाहिए, उस फार्मासिस्ट का अपना एक नाम होना चाहिए। कंबाइनली हम सभी फार्मासिस्ट हैं, बट जो हमारा अलग अलग कैडर होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वही हमारा सबसे पावरफुल वेपन बनेगा। बट हम सब मिलके एक अम्ब्रेला फार्मासिस्ट के अंदर आएंगे। तो ये विजन जब तक हम अपने अंदर लाएंगे नहीं, जब तक हम ईगो क्लैश की तरह बात करेंगे, उससे नहीं होगा। हमें ये चीज डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो ट्रूथ है कि एक डिप्लोमा इन Yes, फार्मेसी उतना नॉलेज अटेंड नहीं कर सकता क्लिनिकली, जितना एक फार्म डी क्लिनिकली नॉलेज अटेंड करेगा। आप उसके कोर्स के सिलेबस और हर चीज को कंपेयर करें। अगर एक डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहता है, तो वो फार्म डी करे, वो एडमिशन ले फार्म डी में, yes, उसका definitely. एंट्री है। तो ये सारे क्लॉज बहुत सोच समझ के लाए गए थे, उसको लोगों ने समझा नहीं। अभी भी वो सोचते हैं कि हमें प्रिस्क्रिप्शन राइट मिल जाए फार्मासिस्ट को। तो एक डिप्लोमा इन फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन राइट कैसे दे दिया जाए, ये सवाल हर डिप्लोमा इन फार्मेसी को एक बार सोचना चाहिए। बेसिक Yes, मेडिसिन sir, की yes. राइट्स भले मिल सकते हैं, क्योंकि जो मितानिन आंगनवाड़ी केंद्र में चल रहे हैं, वो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आई मीन दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं। तो फार्मासिस्ट Yes, अपने नॉलेज के हिसाब से किसी चीज की डिमांड करें, ना कि फुल प्रिस्क्रिप्शन राइट उनको मिलना चाहिए। ताकि हम yes, अगर sir. किसी बात को किसी ऑथोरिटी के सामने रखें, तो हम उसका पक्ष भी रख सकें कि हम किस बेसिस पे उस चीज को आपके सामने ला रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब किशन के सामने ये है, बीइंग अ फार्म डी स्टूडेंट, व्हाट बी योर थॉट प्रोसेस? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है Yes, आपसे। yes, sir. This is almighty questions, and I will just try to get more and more my thought process on this question, sir. Because as the questions itself says that my thought process, I have a lot like points in my mind to express over here. That what could be my thought process, sir? If government has introduced this course, then they should have some planning to before introducing this course, so we can get in proper recognitions on the not on the paper but in the reality. Like if I talk when I was in the first year, I was completely dilemma. Like I was not getting a thing that if I am studying such huge course and I am studying such things that where the teachers are coming when they are coming, like they if they want they have interest to teach, they are coming. This is not how we can get the knowledge, and by self studying we can get knowledge. But the main role, the main pillar behind the knowledge would be teachers. Like if teacher will serve us, the teacher will deliver us more things, more ideas. We can get more and more knowledge. So let me tell one thing that when I was in second year and I went to the hospital for my internship, 1 month internship. When I went there, so one doctor asked me that what you doing. Then I told him that sir, I'm pursuing PharmD from the DN University.
Then he told me that why you are pursuing Pharm-D. Instead, you can do 1 year drop. You can drop for 1 year. You can get admission in MBBS and all. Then I was completely dilemmaed when I came to the college back after from the hospital. I just I was whipped. I completely whipped over there in the front of my principal, sir. That's why we are not getting that kind of recognition, sir. Because if we are spending such high courses, high money, like of up to the 10 lakh, 15 lakh, and after that also we are not getting that kind of recognition. Then, sir, what should be my like? Should I quit PharmD in between, or should I continue? Then he told me that, see, if you want to just get that kind of identifications in front of doctors, you should have knowledge. Then I was completely agree with him. Then for sometimes it told me that, "Ishan, that this is not the matter of feeling shy in front of doctors or in the front of healthcare sectors. If you want to build up and if you want to stand in front of that doctor, you should have that knowledge. When you will go next time to in the hospitals, you will stand in front of him and you will come to know that how he is just expressing after your knowledge. Then the similar thing I applied over in my third year. When I went to the hospital, I stand in front of them, that doctor who just told me that you can just quite Pharm-D, you can take admission in MBBS by dropping one out, or you can go abroad where you will spend around 30 lakh and you can get the MBBS degree. You can come to here, India again, and you can serve the peoples in the better manner. So I thought that okay, let's the my thought what was my thought process on that time. Then when he questioned me, I was continuously questioning to that particular doctor who answered me in that manner, in the rude manner. So he was like, what you are pursuing? Then I told him, this I'm pursuing the doctor of pharmacy. Then he told that, okay, that's great. And then I asked him that similar question before I told that about the broad spectrum antibiotics. Then he was Yes. like that, to treat the patient, we have to just we have to firstly give or prescribe the broad spectrum. Then I told him that, sir, whenever we are prescribing the broad spectrum antibiotics, there could be the high chance of getting resistance to the narrow spectrum antibiotics. And we know that, sir, in India, we have limited medicines, antibiotics. If all the Yes, yes. medicines, of the all antibiotics will get resistant, then what will be the our aim of treatment? What how we will treat to that patients and how one patient will come to good health? Then he was saying that okay, you are also right. These are things. Then so this is how my thought process was going on that time. Another my thought process could be that, sir, we should get, being a clinical pharmacist, being a pharmacy doctor, we should have that clear recognitions from this big, huge platform. I want to say to the higher authority of the Ministry of the PCI with the is that, sir, if you have introduced such huge course in India with similar to the globally standardized course, you should have clear recognition to those students, sir. We can see that many students who are taking admission in this course and they are suffering from this. Could we think that our healthcare sectors could be in that good position as we are expecting on the paper, sir? It would not be, sir. Definitely, it would not be, because if we are just if we are giving that identifications, that recognitions to the MBBS doctors. Similarly, we are giving recognitions to the nurses. So definitely they would have to give to the this kind of recognitions to the pharmacists. And there are the, as you told that we all have to be under the one umbrella. So definitely, sir, in the one family we have one father, we have mother, and we have sister. So this is the complete known as family. So definitely B farm, M farm, farm D farm. This is completely in one family, sir. So we can say that all the families, as you told that within the cadre, within the education qualifications, we should get that kind of recognitions according to the education qualifications. Like if we are the PharmD doctors or the PharmD graduates, we should get that kind of recognitions or the identifications, designations that particular graduate or student is in farm doctors. If a particular student or graduate is DPharm, then they should get their own designations. Like if they're dispensing or compounding medicine, it is not in such a easy process to just dispense and medicines to them, because there could be the many errors, medications errors that would have been occurred during the dispensing and compounding.
but due to God grace or pharmacy sector, it is an beauty of pharmacy sector. We can say that there are the rare chance where the medications occurs due to the किशन, during the dispensing and performance. यहाँ मैं एक Yes, वो sir. दो कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। जनरली क्या होता है कि Yes, sir. फार्मेसी रेंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, जिसके कारण क्या होता है कि जब प्रिस्क्रिप्शन कहीं दूसरे क्षेत्र के डॉक्टर का आ जाता है, मतलब आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आप वहीं के डॉक्टर को दिखाते हैं तो ठीक है, बट आप किसी दूसरे एरिया Yes, से डॉक्टर को चेक करा के अपने मोहल्ले में वो मेडिसिन लेते हैं, तब वो फार्मेसिस्ट उसको पढ़ नहीं पाता। पर वो फार्मासिस्ट है नहीं, yes, ही इज अ फेक फार्मासिस्ट, सी इज अ फेक फार्मासिस्ट। ठीक है। yes, sir. Yes. दूसरी बात क्या है कि आपको एक तो उस तरीके की हैंड राइटिंग लिखनी नहीं चाहिए आज की डेट में। अभी Yes, sir. Yes, sir. 2022 चल रहा है। इस तरीके की हैंड राइटिंग, मेडिकल हैंड राइटिंग एरर, उसको पढ़ना और गलत दवाई डिस्पेंस करना, या गलत लिखना और गलत दवाई करना, तो बहुत सारी टाइप के एरर्स होते हैं जहां डिस्पेंसिंग के समय हो Yes. सकते हैं, और उसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पेशेंट पे पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट Yes. एजुकेटेड नहीं है जिस तरीके से एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर है। इसका सीधा एग्जांपल है Yes. कि आप किसी भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन प्रोडक्ट के पीछे आप देख सकते हैं कि आस्क टू योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट लिखा रहता है। ये सबसे बड़ा Yes, एग्जांपल है sir. कि आपके मेडिसिन एक्सपर्ट कौन है, या तो डॉक्टर या तो फार्मासिस्ट। तो इस बात को आप समझिए। और दूसरा यह है कि देखिए, अगर कभी भी डॉक्टर आपको कल्चर करने को बोल रहा है बहुत देर बाद एंटीबायोटिक देने के बाद, तो आप ये समझ जाइए कि डॉक्टर ने कुछ एरर कर दिया है। वो कल्चर रिपोर्ट Yes, sir. देख के यही पता करना चाहता है कि उसकी कौन कौन सी एंटीबायोटिक अब फेल हो गई है और किसके लिए वो बैक्टीरिया ससेप्टेबल है। तो Yes, sir. Yes. कल्चर तक अगर बात पहुंच रही है तो आपके प्रीवियस डॉक्टर या इस डॉक्टर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, आप ये समझ। तो ऐसे बहुत सारी Sir, चीजों का चलन। हाँ हाँ किशन, बताइए। I want to add one thing. As you talked about the handwriting of the doctor, sir. When right from second year, when I was in second year, I used to read some articles from that time also, sir. From right from there, sir. That I came to know that annually more than 5,000 death occurs due to the bad handwriting of the doctors, sir. यस यस यस। So we can see the amount of people, or approximate 5,000 people are dying due to the bad handwriting of the doctors. We can predict this is the on paper, sir. This data are on the on paper. But if we, in the real situation, if we see this, then this ratio could be the more high, sir. The data can be more high, like up to the 10,000, जी 20,000. ईशान, जो तुमने अभी बात की, इससे मेरे दिमाग में एक चीज और आ रहा है जो काफी चैलेंजिंग है, और मैं चैलेंज भी देता हूँ। अगर डॉक्टर्स Yes, बहुत ही ज्यादा मेडिसिन का नॉलेज रखते हैं, तो वो क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते? क्यों वो ब्रांड नेम में दवाइयां लिखते हैं? ब्रांडेड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो लिखें, और उसका ब्रांडेड मेडिसिन क्या देना है ये फार्मासिस्ट डिसाइड करेगा। yes, वो sir, yes, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लिखे और उसका डोज लिखे। फार्मासिस्ट yes, sir. वो उस ब्रांड में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, उस डोज के अकॉर्डिंग वो दे दे। क्योंकि उस Yes, डॉक्टर sir. को एजुकेट करने एमआर जाता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो ब्रांड नेम उसको Yes, sir. बताता है, उससे वो ब्रांड नेम जानता है, Yes, और वो ब्रांड नेम ही लिख देता है। तो कहीं ना कहीं आप yes, फार्मासिस्ट के रोल को कम ना समझिए। वो किस तरीके से yes, sir. बिहाइंड द कर्टन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और उसे वो रिकॉग्निशन सोसाइटी में नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे, चाहे शेड्यूल के अमेंडमेंट हो, चाहे मितानिन आंगनवाड़ी को ड्रग प्रोक्योरमेंट या ड्रग डिस्पेंसिंग दे देना, या बहुत सारे ऐसे Yes, sir. अधिकार फार्मेसिस्ट से रिसेंटली छीने गए हैं, ऑनलाइन फार्मेसी आ गया है। तो बहुत सारी Yes, चीजें sir. हैं जिसमें फार्मासिस्ट के जो अधिकार हैं वो न्यूट्रलाइज हुए। तो मैं इस Yes, sir. चैनल के माध्यम से सभी जो हायर अथॉरिटी जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत अच्छा हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा सेवा भाव से अच्छी सेवा कर सकते हैं। बस हमें मौके की जरूरत है, और जो मौका हमारे पास ऑलरेडी है उसको ना छीना जाए और हमें मौका दिया जाए। फार्म डी कोर्स उसमें Yes, एक बहुत प्राइम एग्जांपल है, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पे, फार्मेको विजिलेंस के तौर पे, और डायरेक्ट डॉक्टर से 1-to-1 इंटरेक्शन करके इवन प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू पे काम कर सकते हैं इस कोर्स को करके, और हम अपने हेल्थ सेक्टर को बहुत ऊंचा लेकर आते हैं। तो इसी क्लोजिंग नोट के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता जाता हूं, और किशन लबना को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला
और एक टॉक शो हमने ये टॉक शो ही मैं बोलूंगा क्योंकि ये कोई डिबेट नहीं थी। हम एक दूसरे से जो नॉलेज है बातचीत के तरीके अपने व्यूअर्स को देना चाह रहे हैं, इस कोर्स के बारे में जानकारी फैला रहे हैं और क्या क्या हमने चैलेंजेस देखे हैं अब तक और इस कोर्स का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपरबाजियां बहुत हो रही हैं अभी फार्मेसी में। तो इन पेपरबाजियों के बीच क्या रियलिटी है उसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं इस पेज के माध्यम से, फार्मासिस्ट की आवाज में। और फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। तो सबको Yes, sir. बाय बाय, शब्बा खैर। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू विशाल।